For news, well, it's been sounds strange to say this. It's been three test matches at home without a win for Team India. वही टीम इंडिया जो पिछले क्या 11 11.5 साल से बार 16 कंसेक्यूटिव टेस्ट सीरीज जीत चुकी है। पिछले साल इंदौर टेस्ट मैच में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के हाथों एक रैंक टर्नर पर 2.5 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर वो तीसरा टेस्ट मैच हारा। उसके ऊपर से दोस्तों फौरन कॉल लगाए गए थे अहमदाबाद पिच क्रिएटर को ये कहने के लिए कि बॉस ये ग्रीन टॉप जिसका जिक्र हमने किया था दूसरे टेस्ट मैच के बाद इन प्रिपरेशन फॉर द WTC फाइनल एट द ओवल, ये सब बंद करो, चुपचाप हमें एक फाटा विकेट दे दो जहां पर हमारे बैट्समैन रन बना पाए, जहां पे कोहली रोहित सारे स्ट्रगलिंग बैट्समैन रन बना पाए, जहां पर हम ड्रॉ हासिल कर सके ताकि सीरीज जीते। बिकॉज if there was another rank turner, yani a fourth rank turner in a row after the way India's batting, despite the two wins and then that loss in Indore inside 3 days, there were enough signs that India could not take a risk of playing a fourth match on a square turner. तभी एक draw हासिल करने के लिए एक पाटा विकेट लिया गया। और फिर दोस्तों परसों के दिन inside 4 days or just on the verge of 4 days with the extra half an hour taken by Ben Stokes, इंडिया वर बीटन बाय इंग्लैंड। यानी कि 3 टेस्ट मैच हो चुके हैं, केवल 3, आप में से बहुत लोग कहेंगे, लेकिन 3 टेस्ट दोस्तों जिसके अंदर मुझे पर्सनली खुद की बात करूं काफी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं दोस्तों। तो अगर आपको लगता है कि इंग्लैंड इस मैच से जीतने के पहले इनके पास काफी प्रॉब्लम्स थे तो जरा इंडियन टीम के बारे में सोचो दोस्तों। 4 दिन में मैच हार चुके हैं, बैट्समैन स्पिन को नहीं खेल पा रहे हैं, स्पिनर्स इंग्लैंड को जल्दी से आउट नहीं कर पा रहे हैं, ऑली पोप ने स्वीप कर करके अश्विन जडेजा अक्षर को परेशान किया, मोहम्मद सिराज टोटल फ्लॉप, केवल 11 ओवर डाले मोहम्मद सिराज ने अपने घर पे अपने होम ग्राउंड पे, रोहित शर्मा की काफी वीक कैप्टनसी, काफी लॉस्ट फील्ड प्लेसमेंट्स, उसके बावजूद दोस्तों अब देखिए क्या हाल है। इफ यू थॉट दैट वाज टफ फॉर इंडिया, नो जडेजा और नो केएल राहुल फॉर द सेकंड टेस्ट इन विशाखापट्टनम। दोस्तों अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो आपने सुना होगा बहुत बहुत बार कि मैं कह चुका हूं कि जब भी रविंद्र जडेजा किसी चोट के कारण टेस्ट टीम से बाहर जाते हैं तो इंडिया की बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ जाते हैं। बिकॉज दोस्तों राहुल की बैटिंग को आप कहीं ना कहीं कवर कर लेंगे, लेकिन जडेजा जो एक 3 डायमेंशनल प्लेयर है दोस्तों, वो आपको बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में मैच जिता सकते हैं। लुक एट हिज बैटिंग अलोंग विद केएल राहुल्स 86 and Jadeja's 87 जो भी था, these were the two most settled innings of India's first innings. तो Jadeja दोस्तों, like I said, a three-dimensional cricketer who averages 36 with the bat, 24 with the ball and is a gun fielder. जब ये जाते हैं दोस्तों तो टीम की बैलेंस बिगाड़ जाती है। नो जडेजा, नो केएल राहुल, वैसे ही टीम बिना विराट कोहली और मोहम्मद शमी के खेल रहे थे। और अब इन दो बड़े प्लेयर से खासकर लाइक आई से आई अंडरलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ जडेजा द ऑलराउंडर, इंडिया आर नाउ स्ट्रगलिंग at Visakhapatnam to keep this test series sort of in their controls. कौन आएगा इनके बदले, आइए जल्दी मैं अपनी राय आपके साथ शेयर करता हूं। आई थिंक इट्स गोना कम डाउन टू द कंडीशंस इन वाइजैग। केवल 2 टेस्ट मैच इससे पहले वहां पे खेले जा चुके हैं, 2016 में, 2019 में, one against England. In these 2 test matches, my friends, we saw a double 100 from Mayank Agarwal. We saw a big 100 from Kohli. We saw 100 from Pujara. We saw Rohit Sharma in his first test as opener get 200s in the same test match. Lekin, we also saw a 5-wicket haul to Mohammad Shami, a 4-wicket haul to Jadeja, and a 5-wicket haul and a 7-wicket haul to Ravi Chandran Ashwin. Yani ke, it does not seem like it was just 5 years ago. It seems like a long, long time ago when India actually believed in playing on sporting tracks that took the match into day 5, that gave them a great chance of winning, and that gave the fans big hundreds, daddy hundreds, double hundreds, 5-wicket hauls to spinners and 5-wicket hauls to seamers. Gone are those days, because we've seen since the WTC came into effect, this Indian team likes to play on rank turners. मेरा मानना है कि हैदराबाद हार के बाद अब rank turner हमें नहीं देखने को मिलेगा. You're probably going to see a wicket that has runs on offer. It's a coastal city. You're going to see a bit of sea movement, and then from day 2, you're going to see a bit of turn. तो इस लिहाज से मैं कहता हूं आपको कुलदीप यादव खिलाना ही खिलाना पड़ेगा. लेफ्ट आर्म चाइनामैन, वैरायटी, हैज द स्किल टू वेरी स्पेस. आपको केएल राहुल के बदले एक बैट्समैन खिलाना पड़ेगा. अगर आपको लगता है कि वो बैट्समैन नंबर 4 पे खेलेंगे तो मैं कहूंगा रजत पाटीदार,
इनको डेब्यू कराओ। अगर आप ऑर्डर को रीशफल करके किसी और को 4 पे भेजोगे, अय्यर को 4 पे भेजोगे और नंबर 5 की जगह आप खाली रखोगे, तो मैं चाहूंगा कि सरफराज खान उनको आप डेब्यू कराए, क्योंकि सरफराज खान एक स्पेसिफिक नंबर 5 के बल्लेबाज हैं, whereas Patidar is more number 3 and 4. It just depends on which space, which vacancy does India seek to hand the debut to one of these two uncapped players. दूसरी बात दोस्तों, जैसे मैं कह चुका हूं पहले, अगर आपको दूसरे पेसर की जरूरत नहीं है, पिछले 4 टेस्ट मैचेस में मोहम्मद सिराज ने 4 टेस्ट मैच में दूसरी पारी में केवल 12 ओवर डाले। तो यदि आपको लगता हो कि दूसरे पेसर की जरूरत नहीं है, I'm saying drop Siraj, either bring in Washington Sundar. He's not going to bowl anywhere as near as many overs as Ashwin, Kuldeep, and Akshar, but he's a handy fourth spinning option. He's a lefty. He's got two unbeaten scores of 85 and 96 in his 2 home test matches. He extends your batting. We all know that the batting is India's biggest problem. I would say if you don't need Siraj or Mukesh, you don't need a second pacer, go फॉर वॉशिंगटन सुंदर। एक तीसरा ऑप्शन है, बहुत ही लेफ्ट फील्ड ऑप्शन है। अगर आपको शुभमन गिल पर यकीन नहीं है, तो आप शुभमन गिल को ड्रॉप करके आप फिर भी, अगर आपको लगता है कि 2 पेशर चाहिए, आप खिलाइए सिराज को, या यू स्वैप हिम विद मुकेश। यू कैन ऑल्सो ड्रॉप शुभमन गिल एंड ब्रिंग इन वॉशिंगटन सुंदर, बिकॉज माई gut feeling is on current form, Shubman Gill is not going to score as many runs as someone fresh, energized, recharged like a Washington Sundar. These are left field decisions, I know, but desperate times call for bold, drastic measures. और अगर इंडिया को दूसरा टेस्ट मैच जीतना है, to prevent England running away from 2-0, they're going to have to take some bold, drastic left field calls. Now, होगा नहीं होगा मैं जानता हूं, बट लेट्स सी कि आप में से कौन कौन व्यूअर्स मेरी बातों से सहमत है। मैं समझूंगा बहुत लोग कहेंगे कुलदीप का नाम। लेट्स सी। Manish is saying, "Good morning. My pick, Rajat for Rahul, Sundar for Jadeja." सही बात है, सही बात है. I would like to see Kuldeep because of all the reasons we've discussed in the last 5-6 days here. SS90 is saying, Rohit, Jaiswal, Patidar, Gill, Iyer, Sarfaraz, Bharat, Akshar, Ashwin, Kuldeep, Bumrah. Not bad at all. Yes, Kuldeep. हाँ, Kuldeep Sarfaraz, बिल्कुल. Nikhil More पूछते, do you think Dravid is afraid to do what he's not done before? I don't know whether he's afraid or he lacks guts, but he's got a very traditional, safe, secure, somewhat negative attitude, which we saw when he was captain of India for that year and a half, 2 years, and definitely that same conservative mindset has crept into his coaching. Can he be blamed when you're defensive by nature? I don't think so. Sarfaraz for KL, okay. Sundar for Jadeja. Setu Bhaskar is saying the same thing as what Manish is saying. Sahi baat hai. Shanawaz keh rahe, we have very few batters who can play the sweep. Again, Indian batsmen who cannot play sweeps? Shocking to me. I think Sarfaraz comes in picture and he should definitely play. I expect the drama of unfit player gets over here. बिल्कुल सही है। मैं कह रहा हूं, अगर अगर इंडियन टीम को लगता है कि केएल राहुल जिन्होंने पिछले मैच में 4 पे खेला, वो नंबर 4 की वैकेंसी ढूंढ रहे, देन आई वुड गो फॉर पाटिदार बिकॉज ही इज प्लेड मोस्ट ऑफ हिज करियर बैटिंग एट 3-4। लेकिन अगर जो श्रेयस अय्यर को 4 पे डालते हैं और नंबर 5 की जगह खाली करते हैं, देन आई वुड प्ले सरफराज। Bottom line, Sarfaraz plays, to my mind, if he's batting at 5. If you want to replace Gill at 3 or Iyer at 4, then you go for Patidar. सिराज की जगह कुलदीप, बिल्कुल सही से तू। सरफराज डेब्यू रिप्लेसिंग अय्यर। अय्यर won't be dropped. अय्यर won't be dropped. केएल राहुल की जगह तो पक्का है क्योंकि वो इंजर्ड नहीं है। रौनक सिंह, need to drop Gill for 6 months. Yes, I agree. Sarfaraz debut replacing Iyer. I just पता नहीं, between dropping Gill and dropping Iyer, I would drop Gill. I would still keep Iyer for one more test. जब विराट वापस आएंगे फिर आप अय्यर के बारे में सोच सकते हो. Right now, because केएल राहुल की जगह खाली है, I would play a batsman. Between Iyer and Gill, I would drop Gill. Gill is going through a terrible phase. Iyer फिर भी ठीक ठाक फॉर्म में है. How much trust can we have on Iyer? Still, I expect, because look, भले ही से साउथ अफ्रीका टूर में वो बहुत खराब है, लेकिन भैया साउथ अफ्रीका में तो उनके चलने के चांसेस बहुत कम थे, उनकी शॉर्ट बॉल गेम थोड़ी कमजोर है। लेकिन इंडिया के अंदर बिफोर दिस लास्ट मैच द गाय हैड गॉट 350s एंड 100। देयर वाज इनफ साइंस के श्रेयस अय्यर स्पिन को बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं। कहां मैं इनको लेकर बहुत क्रिटिकल हूं, नॉट द सेकंड इनिंग्स में कोई नहीं चला। सेकंड इनिंग्स यानी कि डे 4 मैं गिल को दोषी नहीं, अय्यर को दोषी नहीं ठहराऊंगा। मैं बहुत नाराज था अय्यर से, जो उन्होंने डे 2 पे सेशन के बाद क्या तीसरे ओवर के अंदर रेहान अहमद को छक्के मारने की कोशिश में he got a catch. That is not the kind of application you want from a player who's anyways not going to play too many test matches
outside of India, but his record in India before this match was outstanding. आप उनका overseas numbers वो मत गिनिए. Overseas अय्यर के चलने के chances बहुत बहुत कम है. Why I still have faith in Ayer is इस मैच से पहले he had very good numbers. But if you're going to try and hit a spinner into the stands when you've only got 35 runs to your name and a new session has just started, you are not going to blast that long. He's going to have to change the approach. But between Ayer and Gill, I still think Ayer has got a much better spin game. Will Rinku Singh be a part of T20 World Cup? How is that relevant? We're talking about a test match starting in 2 days. Insane. How big are these injuries to Kale and Jaddu? How long they'll be gone? फिलहाल कोई खबर नहीं है. मैंने एक दो मैसेज डाले लोगों को. I think they should be able to come back by the third test match क्योंकि gap भी है. Ayer last 10 innings 131 lowest score. No, his highest score is not 131. His highest score is he's got 100. आप कह रहे हो अय्यर के पिछले 10 पारी में इनका सबसे लोएस्ट स्कोर 131 है. Doesn't make sense, my friend. He's not got 131 that I can remember. His highest score is he got 105, I think, on debut. I never remember him getting 131. Jamie, I will appreciate if you can make a video on West Indies victory. I thought about it yesterday, but यार और भी काम है और frankly इस channel का audience 99% Indian cricket को लेकर आता है तो just not worth my time. I was going to do it yesterday, but फिर दो तीन और काम हो गए. मैं कल बॉम्बे जा रहा हूँ 3 दिन की शूटिंग के लिए. तो I get your point, but यार not worth my time doing something. The audience is here to talk about Indian cricket. Manish कह रहे हैं stepping out to off spinners understandable, but to left arm orthers and leggy, what were they thinking? They clearly weren't thinking, Manish. You saw me on this channel. I was saying India 231 despite spin bowling problems, India जीत जाएगी क्योंकि इंग्लैंड की bowling मुझे काफी खराब लगी. But Indian team will always do the opposite of what you think. I thought India would win the World Cup final despite having very few runs. वो नहीं कर पाए और उस दिन मुझे तो frankly हैरान किया इस टीम ने. One of the worst batting displays. Tom Hartley, चलिए अच्छी खासी उन्होंने रिकवरी करी लेकिन भाई 20 मैच खेलने वाला क्लब बॉलर को आपने एक दिन में 7 विकेट दिया. चलो हार्टली लेफ्ट आर्म के सामने सदियों से इंडिया को प्रॉब्लम है. आपने जो रूट को 5 विकेट कैसे दिए भाई? जो रूट को शॉकिंग. संकेत कह रहे सरफराज को मौका मिलना चाहिए. डोमेस्टिक में बहुत सारे रन बना चुके हैं. हाल ही में 160 मारे इंडिया ए के लिए. सो आई थिंक ही इज गॉट अ गुड चांस. What is more relevant to the loss from batting perspective? Change of approach or need of application? I think it's the same thing. Approach, application, attitude, whatever of these three words you want to use, they end up being the same thing. So, but of course, that said, there are also technical flaws. Sanjay keh rahe Ayer and Gill flop also in second test. India losing the game. Gill इस फॉर्म में इस कॉन्फिडेंस में गिल तो मुझे लगता नहीं है कुछ कर पाएंगे. अगर जो हैदराबाद की तरह और पिछले 2 वाइजैक टेस्ट मैच की तरह थोड़ा ट्रू स्पोर्टिंग विकेट मिले. देखिए हैदराबाद की पिच में कोई खतरा नहीं था. बॉल एक आध बार इतनी लो रही, एक आध बार उछली. इट वाज नॉट अ स्क्वायर टर्नर. दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट ट्रैक I personally have seen inside India since 2019, the Vizag test match of 2019. आपको एक ट्रू विकेट में क्या चाहिए? आपको 2.5 दिन में मैच खत्म नहीं करना है. आप चाहते हो कि मैच डे 4 तक या डे 5 तक जाए. उसमें आपके बल्लेबाज, आपके रोहित, आपके गिल, आपके कोहली, आपके बल्लेबाज सारे रन बनाए, स्पिनर्स 4-5 विकेट ले और पेसर्स. वाइजैक टेस्ट मैच 2019, उससे पहले 2016 वाइजैक पिच में आप देख सकते हैं विराट कोहली ने वहां 170 बनाए, पुजारा ने रन बनाए, मयंक अग्रवाल ने 219 बनाए, रोहित शर्मा ने एक मैच में 2 शतक लगाए. सामने वाले के बल्लेबाजों ने भी अच्छे खासे रन बनाए. अश्विन ने कुछ 12 विकेट लिए 2 टेस्ट मैच में. मोहम्मद शमी ने एक पारी में 5 विकेट लिए. दैट टू माय माइंड इज अ ट्रू विकेट. नॉट टफ, not dangerous, not turning square. You've got double hundreds, you've got 5 wicket hauls to spinners, you've got 5 wicket hauls to pacers. और ये केवल वाइजैक जैसे पिच पर मुमकिन था. अगर जो ऐसा पिच हमें एक बार फिर से देखने को मिले, then I believe India's batsmen will do much better than on square turners.
Shreyas keh rahe, sir, people targeting Shreyas and Gill because they're easy target. If we see Rohit score 39-24, tell me what's the score of South Africa 2. बिल्कुल ये मैंने कल के वीडियो में कहा था कि शुभमन गिल, look, there's no defending Shubman Gill. Nobody, even the biggest Shubman Gill fan, cannot deny that he's not fit for number 3. और फिलहाल इस current mentality में वो टेस्ट क्रिकेट के 11 में नहीं आने चाहिए. Shreyas Iyer, like I said, at home will always do better than Gill, and his numbers show. But the point is, रोहित शर्मा ने पिछले 17 पारियों में घर पे केवल एक बार 50 पार किया है. इट जस्ट हैपेंस टू बी कि जब उन्होंने पार किया तो उन्होंने नागपुर के पिच पे एक बेहतरीन 100 लगाया, लेकिन पिछले 14-15 पारी में रोहित शर्मा 40 तक नहीं पहुंचे. तो yes, I agree with you. Iyer and Gill, like many people here, are also going after them. They are soft targets. My point is कि रोहित शर्मा ने क्या उखाड़ा? पिछले 17 पारी में आपका केवल एक स्कोर है 50 के ऊपर. आप रोहित शर्मा हो, आप कप्तान हो, आपने क्या उखाड़ा? विराट कोहली के पिछले 16 घरेलू पारियों में शायद 14 बार वो स्पिन पे आउट हो चुके हैं. तो जब बड़े हस्ती रन नहीं बना रहे हैं तो लोग गिल और आयर के पीछे क्यों पड़े? आई एग्री विथ यू माय फ्रेंड, आई एग्री विथ यू. यशस्वी जायसवाल विल प्ले अटैकिंग इनिंग्स और डिफेंसिव. यशस्वी जायसवाल, और ये मैं पूरी उनको लाइसेंस दे रहा हूं, खैर मैं कौन हूं बोलने वाला, बट पर्सनली आई वुड बी टोटली फाइन इफ जायसवाल कीप्स ऑन प्लेइंग अग्रेसिव क्रिकेट. इनका गेम ऐसा है, इनको स्पिन खेलना बहुत अच्छी तरह से आता है. युवा खिलाड़ी है, इनएक्सपीरियंस है. आई वुड वांट टू हैव हिम बैट एग्रेसिवली. आई वुड वांट टू हैव रोहित शर्मा बैट आउट सेशन पर सेशन. गुड मॉर्निंग अमनदीप. आई एम गेटिंग अ फीलिंग टूटने वाला है 12 साल का घमंड. चांस है, बट मैं इस टीम को अभी राइट ऑफ नहीं करूंगा. आई एम ऑल्सो कंसर्न विद इंडियाज फ्यूचर स्पिनर्स पोस्ट अश्विन जडेजा. दैट्स अ वेरी 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 गुड टॉपिक you've raised. I've actually done some homework. I've written a script. I've got all the stats out very, very soon. I'll share that video with you. Will Gill become next Prithvi Shaw? No, Prithvi Shaw is a disaster. Gill is not a disaster. Iyer और Gill aggressive player है. राहुल द्रविड़ ने इनकी बैटिंग बिगाड़ी. I don't think so. I don't think so. But I understand कि आपका सवाल कहाँ से आ रहा है. Shubhreet is back. He's saying, I hope they don't prepare a rank turner. I hope not. I don't think so. That's what elevates even average spinners to war level. बिल्कुल सही कह रहे हो. बिल्कुल सही कह रहे हो. Video on Indian domestic spinners is due. Yes, that's also coming out. Why Gill seems playing with hard hands? My friend, it makes no sense. I have lost reasoning. I've lost words to explain why a player of Gill's talent is going through such a tough phase. आप घर पे रन नहीं बना पाओगे. बहुत बहुत मुश्किल स्थिति है. I don't know. His spin game is, I think his spin game is really dipped. Jardan is back after a long time. Let's be honest, Dravid has done nothing new. I said Dravid should have been sacked after the World Cup. I don't know who put him back in his place. Thoughts on Bharat as a batter? Not international level. Best time to bat Gill in the middle order in the absence of Kohli and Rahul. बात सही है, लेकिन आप नंबर 3 को किसको खिलाओगे? पाटीदार? Iyer? I'm all for it. If the team believes that Shubman Gill should play the second test match, I think it should not be at number 3. I personally want to see Shubman Gill dropped. Let him get a bit of a kick up the backside and sort his game out. Shreyas keh rahe, I think Shreyas looking in low confidence because they dropped T20 series or any reason. Could be. We know what does Shreyas do against spinner. He's like Hulk against spinner. Shreyas, your namesake was like the Hulk at home against spinners before this, despite getting out 10 times spinners. But his game was very suited. ना जाने क्यों उस बंदे ने इतना वाहियात शॉट क्यों खेला रेहान अहमद की बॉलिंग पर. Some 3 overs into a new session. मैंने उस दिन भी कहा था, मैं बहुत क्रिटिकल था श्रेयस को लेकर. मैंने कहा श्रेयस भाई, आपके नाम के पीछे केवल 35 रन थे, 135 रन नहीं थे. He played one of the worst shots after Rohit Sharma in that first innings. सेशन शुरू हो चुका है. आपने बड़ी मेहनत की, आपने केयर के साथ आपने खराब स्थिति को वापस पटरी पे लाया आप, और आपने इतना घटिया शॉट खेला. यू आर नॉट हियर टू हिट सिक्सेस व्हेन यू आर बैटिंग ऑन 35. Shreyas Iyer, you need to first get to 100, then you start hitting sixes. I fully believe and I fully back Shreyas Iyer to do very well in this series against spin, but right now he needs to figure out, like Gill, कि shot selection क्या होना चाहिए. पाटा विकेट देना चाहिए वाइजैक टेस्ट? नहीं संकेत, हरगिज नहीं. अगर आप पाटा विकेट दोगे, बेसबॉल और भी चलेगा. I am not having any hope with Rohit in second test. He will score below 40. If he's gone 15 innings, not crossing 40, I fully expect Rishabh, he will also not cross 40 again. Castle is saying Travis Head steals the show with India, but he couldn't against the West Indies. I don't think you watched that series. He was man of the match in the first test. He changed the tone of that first test.
by getting 132 at a very good strike rate. Just because a batsman gets out for two ducks, my friend Rishabh, it doesn't mean he couldn't do anything. I think you missed the first test. Travis Head was man of the match for his 130 counter-attacking 132 that changed the complexion of the match. So थोड़ा और क्रिकेट देखिए फिर कमेंट करिए. Castle. Rishabh Gere, I'm not having an hope. Rohit Sharma, yeah, done that. This should be last stage for Gill and Bharat. If they don't show that they belong, level, bye bye. I'm waiting for Pumps to come back. यार केएस भरत से नहीं होगा. Sir, where are you from? You are talking amazing Hindi. Shreyas, दोस्तों इसको बताओ ये कौन है. ये सवाल मैं 40 साल से ऊपर से जवाब दे रहा हूँ. मैं इसका जवाब अब देता नहीं हूँ. Rohit Sharma comeback upcoming and loading now. He just has to score a good 70-80. He's got to score a big 50-200. Well, if there's one ground, Sankalp, where he would want to score, it's Vizag because the last time he played a test match there, he got 200s in the same match in his first test match as an opener. But current form में मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि रोहित शर्मा 50 तक पहुंच पाएंगे. Yes, संकेत रोहित इन प्रेशर बिल्कुल सही कह रहे हो आप. सरफराज will get dropped from third test when कोहली comes in. मीम्स वर्ड ये पहले भी कह चुका हूं. मुझे एक्चुअली घंटा फर्क पड़ता है कि पाटीदार और सरफराज में से कौन खेले. पुजारा को लाओ और रहाणे को लाओ. मुझे पर्सनली घंटा फर्क पड़ता है क्योंकि जब कोहली आएंगे तो एक प्लेयर को वो जगह खाली करनी पड़ेगी. लेकिन ये मैंने तब कहा था जब जब केएल राहुल को इंजरी नहीं लगी थी, जब जडेजा को इंजरी नहीं लगी थी. अगर हम मान के चले कि तीसरे टेस्ट के लिए शायद केएल राहुल नहीं भी हो तो आपको एक नए खिलाड़ी को ड्रॉप करना पड़ेगा. अब या तो पाटीदार या तो सरफराज इनमें से एक अपना टेस्ट डेब्यू करेगा वाइजैक टेस्ट मैच में. Whoever scores from those two, and let's say Gill doesn't score, Gill is going to have to go out. ये मैं 3 हफ्ते से कह रहा हूं जब से टीम साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच खेल रही थी. खेल के भी नहीं आई थी, खेल रही थी. मैंने कहा शुभमन गिल अगर पहले 2 टेस्ट मैच में नहीं चलेंगे इनको ड्रॉप करो. सो आई अंडरस्टैंड कि आप क्यों कह रहे हो कि सरफराज बाहर जाएंगे. लेकिन अगर सरफराज ने 35 रन भी मारे और गिल नहीं मार पाए वो 35 रन, सरफराज खेलेंगे और गिल बाहर जाएंगे. लिख के लो मुझसे. श्रेयस गूगल कर लो भाई. कर सकते हो. टॉप बैटिंग ऑर्डर इंक्लूडिंग मिडिल ऑर्डर ऑलवेज अंडर प्रेशर. बिल्कुल सही कह रहे हो. Chances of India win at Vizag, Anand, it depends on the pitch. Give a true pitch and you'll win. Give a rank turner, you will lose. Give a pata, you will lose. Did selectors intentionally did not select Ishan Kishan in second match squad, teaching the mental fatigue issue? I am hearing a lot of mixed things. I really don't know for sure. Sankalp Kere, don't count out Rohit. You have done watch along with Akash Chopra and doubting Rohit on English soil and everyone knows that happened. बिल्कुल, but ये match English soil पे नहीं खेला जा रहा है संकल्प. ये मैच उन कंडीशन में खेला जा रहा है जहां पिछले 17 पारियों में रोहित शर्मा केवल एक बार 50 पार कर चुके हैं. ही इज अ बैट्समैन clearly struggling with his form. Had this match been in England, I would have had him for 200. But Sankalp, use some common sense. ये मैच इंग्लैंड में नहीं खेला जा रहा है. रोहित शर्मा 17 पारी से एक बार 50 पार कर चुके हैं, यानी कि 16 पारी में बंदा 40 तक नहीं पहुंचा. तो खुद से मेरी उम्मीदें उनसे बहुत कम है. मैं बैट्समैन को करंट फॉर्म, उनके फुटवर्क, उनके हैंड आई कोऑर्डिनेशन, उनके जजमेंट में बेस करता हूं. और फिलहाल जिस फॉर्म रोहित शर्मा में है, मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि वो 50 पे पहुंच पाएंगे. बाकी आपकी बात मैं मानता हूं, बड़े प्लेयर है, लेकिन पर्सनली unless you give a sporting track, I don't see Rohit Sharma coming back. Sir, you are talking about Rishabh Pant comeback. Can you tell me when Rishabh Pant played match winning? श्रेयस, माफी चाहूंगा, शायद आप नए व्यूअर हो, लेकिन इतना बेबुनियाद सवाल शायद मेरे इस चैनल में कभी नहीं आए हैं. प्लीज मेरी दरख्वास्त है कि आप घटिया सवाल ना करें. जो भी हो, बात सिर्फ शेयर करिए. अगर आपको यहां पे इंगेज करना है मेरे से, अगर आपको कुछ डायलॉग करना है मेरे साथ, तो प्लीज 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 इतने घटिया इडियोटिक स्टूपिड कमेंट्स मत करना. अगर आप कह रहे हो कि ऋषभ पंत, खैर मुझे जवाब देना नहीं चाहिए ऐसे, आप थोड़ा श्रेयस प्लीज वॉच सम क्रिकेट बिफोर कमेंटिंग. आई एम शॉक्ड एट योर लैक ऑफ नॉलेज when it comes to Rishabh Pant's career. सर, आपको किस पे भरोसा है रन्स मारेगा? Somehow, despite the terrible innings, I will say Shreyas Iyer. Jaiswal could get runs. I hope Rohit gets some runs. But if you want one name right now, I'm going to say Jaiswal. What to expect from this team in Vizag Test? Changes, much better application, and I hope that this team has not gone and requested a square turner. संकल्प कह रहे हैं पर 3 साल इन रैंक टर्नर्स पे उनके ही 100 है, not anybody. If he doesn't perform, then England will run for sure.
बिल्कुल, अगर आप 17 पारी में केवल एक 100 मार चुके हो और और उनके अलावा 15-16 पारी में 40 तक नहीं पहुंचे, तो उस 100 से क्या फायदा? Great innings, but it's 100 and 16 scores between 0 and 40. To my mind, the 16 innings without getting past 40 say far much more about Rohit Sharma than one match winning 100. To score big, Rohit just needs to play sensibly. बिल्कुल, he played the worst shot of his career before stumps on day one. क्या शॉट था ये? लड़का जायसवाल बढ़िया खेल रहा है, आपको बस सपोर्ट करना है, आप स्टंप्स पे जाइए, 35 नॉट आउट। पता नहीं क्यों रोहित ने अपने करियर का सबसे घटिया शॉट खेला जैक लीच की बॉलिंग पे। जस्ट बैट सेंसिबली, आपको छक्के चौके लगाने की जरूरत नहीं है। लेट जायसवाल डू इट। रोहित शर्मा, यू आर वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स इंडिया एवर हैड। अप्लाई योरसेल्फ मैन, अप्लाई योरसेल्फ। चिल करो भाई, कोई बच्चा होगा जो भी होगा, लेकिन यार बेबुनियाद सवाल मत करो। बट हाँ ठीक है, नॉट एवरीवन हैज द सेंस दैट यू एंड आई हैव माय फ्रेंड। सर, वॉशिंगटन इन प्लेस ऑफ जडेजा, हाँ हो सकता है, बट संकेत आपको कुलदीप खिलाना पड़ेगा। A shade of Sehwag in Jaiswal. A shade. He needs more time. According to you, who is best player against spinner in India right now from the current team? Shreyas Iyer. What else do we have? Any more comments? नहीं। खैर, मैं तो अपनी बात कह चुका हूं। I would want to see, if you don't want a second pacer, get rid of Mohammad Siraj. Um, Basically, आपको जडेजा के बदले दो प्लेयर खिलाने पड़ेंगे मेरे हिसाब से। एक होना चाहिए वॉशिंगटन सुंदर, लेफ्टी, bats low, can change the match, gives you batting depth, batting cover. And Kuldeep is of course a fantastic Chinaman. 4 मैच खेल चुके हैं घर पे, अच्छे रिकॉर्ड है। उन चारों मैच में से इंडिया एक भी नहीं हारी है। सो यू नीड कुलदीप द बॉलर, ये तो हम पिछले 10 दिन से बात कर रहे हैं। एंड यू नीड टू फाइंड अनदर लेफ्टी बैटिंग रिप्लेसमेंट। मेरे हिसाब से वॉशिंगटन सुंदर, बट between the Gill at number 3 problem and the lack of Mohammad Siraj having to bowl, I would say bring another batsman in. If you think you want to bat somebody at number 3 or 4, it's Patidar. If you think it's number 5, it's Sarfaraz. Rohit Sharma looking insecure, very insecure, and what a bad captain, my gosh. सबसे ज्यादा खतरा रूट से है। वाइजैक में बाउंड ज्यादा होगा, एजेस कैरी करेंगे। हाई, बिल्कुल सही बात है। Is Pope a threat to India's chance of a series win? Anand Mehta, I said this on the Cricket Next news channel. I was asked by their anchor the day before the Hyderabad test to name one England batsman who I think is a big threat to India and who can do Kevin Peterson 2012 like things. And I said Ollie Pope. The other 4 panelists all said Ben Stokes. I said Ollie Pope. What did Ollie Pope do? He played the second best innings by an English batsman in India since Kevin Peterson's 186 in 2012. I called out Ollie Pope a day before this test match saying this guy can really bother India. So you've got my answer. Do you think when Rishabh Pant will return, he will have same touch? He'll have same touch. You don't lose your touch like that. Will Anderson play at Vizag? Yes, Anand, I believe he will. कुलदीप इन प्लेस ऑफ सिराज एंड प्ले विद 4 स्पिन 1 पेस। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं, आपको दूसरी पेसर की जरूरत नहीं है। आप सिराज को बाहर करो, आप 2 बल्लेबाज को लाइए, आपकी बैटिंग वीक है, और आप कुलदीप को लाइए। सर, पार्ट टाइम स्पिनर्स भी इंडिया में विकेट लेते हैं। ये तो आपने केवल 2 नाम लिया। आपको माइकल क्लार्क याद है? माइकल क्लार्क ने अपने तीसरे टेस्ट मैच में 6 विकेट लिए। डीन एल्गर ने। जब भी आप रैंक टर्नर्स या स्क्वायर टर्नर्स दोगे भाई, ये बैकफायर करेंगे। आपने डीन एल्गर का जिक्र किया, ये वही 2015 टेस्ट मैच है जो 3 दिन में खत्म हुआ था। जडेजा ने कुछ 8 विकेट लिए, लेकिन डे 1 पर एल्गार ने शायद पहली बार बॉलिंग करी, वो 4 विकेट ले गए। सेम एज जो रूट। पार्ट टाइमर्स हमेशा चलेंगे जब आप थोड़े स्पिन ट्रैक्स देंगे। एग्जैक्टली द काइंड ऑफ रियलिटी चेक नीडेड। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। Our team revolves around IPL batting track heroes, not around Ranji stars. But again, my friend, I understand where you're coming from, but the Ranji level is, unfortunately, मुझे बहुत दुख होता है, the Ranji level is very, very weak. You need to score runs in Ranji. You need to take wickets in Ranji ताकि आपको वो प्लेटफॉर्म जो दिया गया, आप उस प्लेटफॉर्म को पार करके, but unfortunately, the IPL exposure, the IPL experience, it does, and again, I hate to say, it does actually count, and this is a very controversial statement, mentally and skill-wise, a couple of good IPL seasons actually count, and you're not going to give me, they actually count more for more than 1,000 runs. क्योंकि रणजी में आपको खराब टीम्स ज्यादा मिलते हैं, आपको खराब कंडीशंस,
कम मिलते हैं, आपको बैटिंग ट्रैक्स ज्यादा मिलते हैं। और ये मैं बहुत बहुत साल से रणजी देखकर कह रहा हूं, यस आई एम ऑल फॉर सरफराज स्कोरिंग 1,000 रन्स, आई एम ऑल फॉर सौरभ कुमार टेकिंग विकेट्स, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा डोमेस्टिक स्टैंडर्ड इतना पुअर है कि it doesn't necessarily mean you're going to take to test cricket like a fish to water. Yes, 6 to 9 Clark. Should Rishabh Pant play some domestic matches? He will. He will play the IPL, then he'll play domestic, and then he'll come back. वो ऐसे वापस नहीं आएंगे। बुमराह भी नहीं खेलेगा, वर्कलोड मैच उसको डे 3 काफी क्रैम्प थे। बिल्कुल, बुमराह was never going to play 5 test matches. That's why they have Mukesh Kumar. We should also fear Ben Duckett. He also looked good against spin, have the ability to play long innings. बिल्कुल सही है, but जब तक अश्विन है वो ज्यादा रन नहीं बना पाएंगे। सर अकॉर्डिंग टू यू व्हाट यू लाइक, नंबर्स और विनिंग ट्रॉफी? आप शायद नए आए हो। मैं जब से ये चैनल मैंने शुरू किया 4 साल पहले, मैं कह चुका हूं मुझे रैंकिंग से घंटा फर्क पड़ता है, मुझे रिकॉर्ड से घंटा फर्क पड़ता है। इस इंडियन टीम ने 11 साल में एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती है। Not good enough. You only play sport to win trophies. You don't play sports for personal glory. You don't play sports to win bilateral series. ये टीम कुछ दिन पहले तक तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 थे, सिर्फ और सिर्फ घर पे टीम्स को पेल के। आपके पास ट्रॉफी क्या है? एशिया कप, जहां केवल 5 टीमें थी। शर्म करो और आईसीसी ट्रॉफी जीतना शुरू करो। और ये मैं एक लाइफ लॉन्ग, मैं 28 साल से इंडियन क्रिकेट को देख रहा हूं, इंडियन क्रिकेट को सपोर्ट कर रहा हूं। मैं पिछले 18 साल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूं। इंडिया इज माय फेवरेट टीम। लेकिन भाई शर्मिंदगी की बात है कि 11 साल से इस टीम ने एक भी ढंग का ट्रॉफी अपने नाम नहीं किया। Tanush Kotian looked good against UP. Is it time to look for Ashwin replacement? Not yet, not yet. The guy's been doing some good things from Mumbai, but long time ago. And bottom line is, my friend, there is no replacement for Ashwin. विराट अपने आने पर बाहर कौन जाएगा, वो तो मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका हूं। हमारा डोमेस्टिक पूल है तो काउंटी में कौन थुर्रम खान खेलता है भाई? क्योंकि मैंने रणजी के लिए कुछ कहा, आप काउंटी से क्यों तोड़ रहे हो? काउंटी वालों को छोड़ने दो, हमें काउंटी से क्या फर्क पड़ता है? हमें इंग्लैंड से क्या फर्क पड़ता है? हमें फर्क पड़ता है कि हमारा डोमेस्टिक सिस्टम अच्छा क्यों नहीं है। पिछले 2 साल से टॉप 15 रणजी ट्रॉफी विकेट टेकर्स में से 15 में से 12 या 11 स्पिन बॉलर्स थे। क्या उनमें से एक स्पिन बॉलर अभी इंडिया के लिए खेलने के लायक है? नहीं है। मान लो हमारा सिस्टम खराब है, आप हमेशा हर बात को आप लोग फॉरेन से क्यों तोलते हो? बाहर में जाए फॉरेनर्स, उनको छोड़ो। क्या हम काउंटी से कंपेयर कर रहे हैं? क्यों करना है? मुद्दा यह है कि हमारा डोमेस्टिक सिस्टम अच्छा नहीं है। अगर अच्छा होता तो सरफराज खान बहुत पहले खेलते। लेकिन सिलेक्टर्स को पता है कि सरफराज के रन्स, पृथ्वी शॉ के रन्स अगर हम छान बीट करेंगे तो फायदेमंद इनिंग्स, इंपैक्ट इनिंग्स एक्चुअली बहुत कम है। आप 6 महीने निकाल के रणजी ट्रॉफी देखिए, जितना कि मैं देख चुका हूं, आपको अपना जवाब मिल जाएगा। ये मुझे कोई तुक नहीं बनता है कि मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, आप उसको इंग्लैंड से कंपेयर कर रहे हो। फायदा क्या है? Can Sarfaraz slot right in the squad? Again, like I said, if he's batting at number 5, then yes. If you want to bat someone at number 3 or 4, then personally, because Patidar has batted more at 3 or 4, I would go for that. Will Anderson break Sachin record of playing 200 test matches? Rishabh, how many test matches has he played? I don't know off the top of my head. Fly on dreams. I can't understand how we lost even after 190 run lead. Well, I discussed this 4 times, 3 times since then. It's because, like Rahul Dravid admitted, and like I said before, Dravid admitted, you left out 100 runs on day 2 by giving 6 wickets. You had no answer for Ollie Pope. Your spinners were swatted and reverse swept. The spinners were terrible. Back-to-back innings. For the first time in his career, Jadeja went for 4 plus over. Bad. Terrible captaincy from Rohit Sharma. Bad bowling rotation, starting the new session with the wrong bowlers. Defensive field placements. Akshay Patel dropped a catch. KL Rahul dropped a catch. That's where the match was lost. And then, against a very inexperienced club-level bowling attack, you could not even get to, what, 150? That's why. KL Rahul in every difficult situation doesn't perform well. बिल्कुल सही कह रहे हो आप. I've never seen him do anything in a crunch match. Sarfaraz struggle against raw pace. We've seen in IPL, but hope your performance is good. Hope so. My playing 11: Rohit, Jaiswal, Patidar, Sarfaraz, Iyer, Akshar, Washington, Ashwin, Kuldeep, Bumrah, Siraj. अगर आपको लगता है कि 2 पेसर ठीक है तो सही बात है. Mr. Live, do you think Rohit's kind of laid back captaincy works best for baseball? Right now, laid back captaincy lost you a test match, so I don't think it's going to work, my friend. 184 or 182. Ooh, yaar, 18-16 test match at the age of 42, Rishabh.
Very tough. I think that record will probably stay all Sachins. Why does India don't practice with new hard ball? No, they do. They do. They spend a lot of times in match simulations with the hard ball. I've seen this many times. Sir, team drop Shreyas and Gill. गिल को ड्रॉप कर सकते हैं अय्यर फिलहाल नहीं एंड प्ले टू टेस्ट विद रजित एंड सरफराज देन पीपल विल नो हाउ टफ टू प्ले बात सही है अगर आपको लगता है कि गिल और अय्यर में वो बात नहीं है तो दो टेस्ट मैच दीजिए सरफराज को और पाटीदार को लेट्स सी आई वांट टू सी गुड पॉइंट कैन वी प्ले सुंदर एट 3 इन प्लेस ऑफ गिल नो 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 Another reason is really bad batting technique. Yes, I did a whole video on this yesterday. मनीष कह रहे हैं ब्रिंग बैक मनीष आपने मेरी दिल की बात छू ली मेरा दिमाग खराब हो रहा है पिछले 4 लाइव स्ट्रीम से मैंने 3 मिनट का वो टाइमर बंद किया और आपके सवाल के जवाब देकर मैं परेशान हूं मनीष ने दिल की बात छीन ली मैं अगले लाइव से वापस वो 3 मिनट का टाइमर रख रहा हूं भाई बहुत बहुत टफ है आप लोग का सवाल का जवाब देने के डू यू थिंक बिकॉज केएल राहुल डिडंट परफॉर्म इन दैट डिफिकल्ट दैट्स व्हाई द्रविड Shreyansh, when did Dravid drop KL Rahul? Last year, Border Gavaskar Trophy. Last year was the first time that KL Rahul got dropped since Rahul Dravid took over from the coaching because it was so obvious that against the spinners he was going through a terrible time. ऊपर से उस समय शुभमन गिल का व्हाइट बॉल फॉर्म बहुत अच्छा था बट राइट नाउ जब से केएल राहुल वापस आए इंजरी के बाद से राहुल द्रविड़ इनको कभी ड्रॉप नहीं करेंगे he's injured right now, poor fellow. Will Sarfaraz keep wickets? No, 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 no. On test debut? Oh, no, no, no chance. Please, please. इतना क्या डिफेंसिव सोच है इंडिया की 9 तक बैट्समैन चाहिए अब बिल्कुल क्योंकि आपके टॉप 6 लगातार 3 साल से काम नहीं कर पा रहे हैं तभी आपको 3 साल पहले अक्षर जैसे प्लेयर को नंबर 9 पे खिलाना पड़ा पिछले साल के बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में अक्षर के आंकड़े देखिए सबसे सफल बल्लेबाज आपका नंबर 9 था ये शर्मिंदगी की बात है टॉप 6 के लिए I think India is dependent on Rohit. I think India is dependent on all 11 players, not just one player. केएल और हार्दिक में परफेक्टली फिट बिल्कुल ये तो इतनी मुझे चिढ़ मचती है इस बात की कि ये साले प्लेयर टेस्ट मैच मिस करेंगे बायलैटरल मिस करेंगे वर्ल्ड कप मिस करेंगे लेकिन साले आईपीएल के लिए पूरे 14 के 14 मैचेस करेंगे उफ रियली रियली राइल्स मी अप मैन इट्स सो अनोइंग देखना ये सारे फिट होंगे आईपीएल के लिए Sir, after comeback in Rishabh, who will be out? I think it's competition between Shreyas and Gill. Huh? Most likely. Shreyas lacks defense to be a successful test player. In India, no. Overseas, for sure. Overseas, I've been saying it for weeks now. Do not play him in England. Do not play him in South Africa. Do not play him in Australia. What's the way forward in this series considering baseball factor? Number one, like I've said, ask for sporting tracks. Do not ask for a flat track. It'll backfire. Do not ask for a square turn. It'll backfire. Play traditional sporting wickets which have runs for the batsmen, wickets for the spinners, wickets for the pace bowlers, which was the norm in India before the WTC started. Since the WTC started, this desperation to accumulate points to get to the final, it's actually screwed India's chances. You're playing 99% matches on ranked turners. Your batsmen are not scoring hundreds. Your pacers are not doing much. And even if it's getting you to the World Cup final, आपने 2021 में साउथहैम्पटन में क्या उखाड़ा आपने पिछले साल जून के महीने में तो ओवल में क्या उखाड़ा गो बैक टू द प्री 2020 द प्री कोविड फॉर्मेट of playing traditionally sporting wickets which lasted 4 days which lasted 5 days when Rohit was getting double hundreds when Mayank Agarwal was getting double hundreds, when Virat Kohli was getting double hundreds, when Ashwin was getting wickets, when Mohammad Shami was getting wickets. On these ranked turners, barring the odd Umesh Yadav spell, barring the odd Bumrah spell, your fast bowlers are doing nothing. Your fast bowlers, since the WTC came into effect and India started playing almost on square turners, your pace bowlers are hardly bowling in the second innings. Your batsmen are not scoring runs. All their numbers, all their averages are dipping. Save Test cricket, save Iyer, save KL Rahul, save Gill, save Rohit, save Virat. Go back to sporting tracks where your batsmen can regain confidence. Square turners are only good for the spinners. फिटनेस को छोड़ो पर्सनल रीजंस आईपीएल में भी दिखता पता नहीं भाई केएल राहुल डिड नॉट परफॉर्म ड्यूरिंग डिफिकल्ट सिचुएशन बिल्कुल वी नो दिस व्हाई इंडिया डोंट हैव प्लेयर्स लाइक कमिंस एंड स्टोक्स इज इट बिकॉज ऑफ द पिचेस और माइंडसेट बोथ माय प्लेइंग 11 रविशंकर रोहित जायसवाल गिल अय्यर पाटीदार सरफराज भरत सुंदर अश्विन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बुमराह yes no second seamer I'm all for that
Who have you dropped? You've no, you brought in a year. That's a good 11. That's a good 11. I agree. Still think fielding was the biggest difference between sides. In the end, we lost by 30 runs. Fielding was there, but bad DRS reviews, bad captaincy, defensive field placements, and then that shocking batting display on day two when you gave away 6 wickets. You should have ended the day 421 for three, not 421 for seven. Sir, what if Jadeja and KL Rahul are not available in time for third test? What do you think about the series? Let's cross that hurdle when we get there. Last question of the day. Who can play marathon knock of our team like Pope if not Rohit? In theory, Jadeja, because he's done it. But look, the guy was all set for a marathon innings on day three. But right now, in this team, nobody. Chaliye, gotta go now. Lovely. 40 minutes, my gosh. Thanks for watching. Please subscribe, please like, please share. Love you all. मैं आपसे कल मिलूंगा. कल के वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे in more detail the second test starting day after. Love you all. Take care. Jai Hind.